सेकंड तो आपका है जब हम सुपर इंटेलिजेंस पे जाएंगे, जैसे बोला जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स होता है आपका, तो उनको के साथ सबसे बड़ा खतरा ये है एक टाइम ऐसा ना आ जाए जब पानी बढ़ना शुरू कर रहा है, एक ऐसा टाइम आने वाला है जब जो एआई है वो हावी हो जाएगा ह्यूमन बीइंग पे, मेरा इसलिए तो करता है तो सुपर इंटेलिजेंस व्हाट इज हमने इंटेलिजेंट कर आप लोग में भी एग्जांपल बताते हैं पे कुछ टाइप की चीजों को दिखाया है। इसमें बात आपको पता है कि सबसे एक सबसे बड़ा खतरा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? अगर मशीन साथ यूज करने लगेगा तो मन कहाँ तक एक कंपनी है विल्किंसन सॉर्ट जो मेजर बनाता है सिगरेट, ठीक है, जानते हैं आप विल्किंसन सॉर्ट, सॉर्ट मतलब क्या होता है तलवार, राइट? और उनकी मशीन जब बना रही है मेजर ब्लेड, मतलब वो इंसान काटने से राइट, तो चीजें चेंज होती है। वैसे ही जब आप किसी मशीन पे करोगे तो मशीन कहाँ होगा, मशीन जब इंसानों जगह ले लेगा तो राइट, जहाँ पर 10 आदमी लगते थे एक मशीन काम हो रहा था 10 आदमी नौकरी गई, तो जब आप सारे सेक्टर्स में मशीन को ऑटोमेट कर देंगे आपका काम नहीं है। अब इससे एक चीज और होता है, आप लोग ना जितनों के घर में कोई काम करने के लिए आता है, मतलब भाई मेड थोड़ा बहुत हाँ हाँ, पता नहीं लगने में इसका कौन लगी। दोनों हफ्ते में एक बार दो बार कभी एक बार एक हफ्ते में 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में एक बार उनका जैसा प्रोबेबिलिटी होता है वैसा करते हैं। वहाँ मेड आता है या आती है आई दो प्लेट सब से आपने काम किया बढ़िया वेल ड्रेस रहेगी सिस्टमैटिक रहेगी तो सारा काम करेगी जो आपको काम बताओ उसका काम करेगी और आप टाइम लगा $200 मिलेंगे। हमारे पास इस कंट्री में हमारे देश में हमारे पास बहुत इजी है, लेकिन अगर इसी चीज को हम लोग उसके लिए करें तो अगर वो एक बार रोबोट के ऊपर इन्वेस्ट कर देते, ठीक है, तो उनको हर बार $200 में बचे, उनके लिए चीज अच्छा है। तो चीजें ये है कि हर चीज खराब नहीं, हर चीज, ठीक है। अब आते हैं मूवीज से एग्जांपल से टेक्नोलॉजी यूज करेंगे इसका आपको पड़ जाएगा। एवेंजर्स हीरो मैन कौन देखा है आपने, तो क्या होता है अल्ट्रॉन एक सुपर रोबोट, ठीक है, इसका जो जार्विस है जो स्टार्टर टोनी स्टार्क इसने एक सिस्टम बनाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जार्विस, ठीक है। जार्विस क्या करता है वहां पर वो चीजों को नॉलेज चला देता है इस तरह, राइट। साइफाई जो मूवी होती है हाइपोथेटिकल मतलब जो रियल नहीं हो सकता है वो बता के पड़ता है, जैसे सुपरमैन, सुपरमैन ऐसा कोई नहीं है आएगा वो बता के बिल्डिंग को खा के ले जाएगा, ऐसा कोई बात है नहीं। देयर आर सुपर ह्यूमन जिनकी स्पेशल एबिलिटीज है जो नॉर्मल ह्यूमन से ऊपर होती है, बट नॉट लाइक सुपरमैन, ठीक है, ऐसा ये स्पाइडरमैन ऐसा कोई नहीं। आप इसमें एक डाटा सिस्टम को जब उसने सुपर इंप्लीमेंट किया, वो क्या किया सुपर इंटेलिजेंस सुपर इंटेलिजेंस कर दिया, ठीक है। दैट इज इंटेलिजेंस टू सुपर इंटेलिजेंस। जब आप इंसान के ऊपर खाली हो जाओगे मतलब उनकी सोच से और आगे बढ़ जाओगे, एडवांस आप उससे पहले पहले करने लगोगे, तो एक तरीके का समझते सुपर इंटेलिजेंस वो है कि जब हम इंसान के सोच के ऊपर पहुंच जाए, वो क्या हुआ दैट बिकम अ थ्रेट, खतरा बन गया,
जितने भी हॉलीवुड मूवीज होते हैं खासकर अमेरिकन, वो एक सिटी के लिए खतरा जो होता है दैट इज थ्रेट फॉर द बॉर्डर, वो एक सिटी के लिए दिखाने के लिए बॉर्डर थ्रेट करता है, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा, राइट। अगर हम मिलिट्री की बात करते हैं तो मिलिट्री को अगर हमने फ्री हैंड दे दिया, अगर हमको कंप्लीटली हम एक मशीन से रिप्लेस करते हैं ह्यूमन, तो क्या वो वैसा डिसीजन या वैसा कुछ डिसीजन ले सकता है जो ह्यूमन ले पाएगा? क्या इमोशन हो सकता है कि इमोशन जो है इक्वालिटी ह्यूमन को मशीन में नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली यहीं पर अगर सेंसिटिव डिसीजन लेना है किसी केस में, तो वो सिर्फ वही डिसीजन लेगा जो उसको प्रोग्राम किया हुआ है। मशीन है, कंप्यूटर है, मतलब प्रोग्राम नहीं होगा, और प्रोग्राम में एडवांसमेंट को थोड़ा बहुत अपने स्किल देता है, तो वो जो रहता है वो अलग चीज है। बट स्टिल अगर हम लोग इस टाइप की चीजें करेंगे तो क्या होगा हमारे लिए? दिस आर द सेवरल डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई। साइबर टेक कंपनी को लोग क्या करते हैं, एआई कंपनी बनाते हैं तो रोबोट बनाती है, उसके बाद फ्यूचर में रोबोट बनाता है और वो पास के देश में से तो पास में आते हैं और लोगों को आता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट माइट बी पॉसिबल अगर हम इस तरीके से बढ़ते हैं। चैट जीपीटी यूज किया, क्या यूज किया, स्क्रिप्ट लिखा, क्यों लिखा, आप अपने लाइफ को इजी बनाते हो, कितना चलते हो आप डेली, गाड़ी चलते हो, जहाँ जाने की गाड़ी यूज करते हो। जब हम लोग किसी भी सहूलियत की तरफ जाते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज, हम एआई जो बना रहे हैं, देखो एआई जो है हमने कभी ये नहीं किया कि डिस्ट्रक्टिव हो। एक बात फैक्ट है कि हमेशा दो टाइप के लोग होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव। जो टॉप टेररिज्म में जो टॉप पे है उसामा बिन लादेन, ठीक है, उसामा बिन लादेन एक डॉक्टर वगैरह था जो अभी एक अलकायदा को लीड कर रहा है, अभी मारा गया, अभी लास्ट में मारा गया, ठीक है। क्या ये इंटेलिजेंट नहीं है? या तो टॉप होते हैं ना, इंटेलिजेंस होता है, चारों प्रवृत्ति होती है, करेक्ट। सुर और असुर जो बोलते हैं, देव और असुर तो टाइप के लोग होते हैं ना। भगवान ने जब बनाया तो ये थोड़ी भी बोला होगा कि एक कुछ खराब करेगा। हम देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, क्या करें हमारे लोकल न्यूज हो, देश का न्यूज हो, स्टेट का हो, वर्ल्ड का न्यूज हो, दोनों टाइप की चीजें होती है। तो हर कोई जो मशीन बना रहा है तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी कर सकता है, डिस्ट्रक्शन। और इसके अलावा चीजें ये होती है कि जब हम करते हैं तो हमेशा ये नहीं कर सकते भाई, हम सकते हैं कि हम यहाँ तक इस चीज को बना रहे हैं, हमने उसको डिटेल्स दिया। अभी गूगल का बार्ड है, मैं आपको चैट जीपीटी है, बड़ी बार्ड एक यूज है अभी कि वो आपके आई को स्कैन करके आपका एक्सरे को एलिमिनेट कर देगा, एमआरआई में लगेगा, सीटी स्कैन होता है वो लगेगा, सिर्फ आई को स्कैन करके तो आपके बॉडी का पूरा रिजल्ट दे देगा, डायग्नोसिस कर देगा, बेटर है बेटर ना नहीं है क्या कब अभी आप ठीक है। अगर आप एक तरह जो काम होता है आप करोगे या फर्क करें। कांति जी कप नहीं है।
उसकी पैदावार बढ़ गई। ठीक? टमाटर जो होता था पहले इतना कमजोर हुआ करता था, बहुत नाजुक फल था, ठीक है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन आज के डेट में हम उसको रख देंगे तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ना लाल होगा ना पीला होगा। अगर हरा हरा रहेगा, पीला पीला रहेगा, लाल पीला होगा। क्योंकि ये देखो ना, टाइम खत्म हो गया, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। ये क्यों हुआ? किसानों को फायदा हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ? What are the bad effects for the society? All this is all. इसका दुष्प्रभाव ये हुआ, कीटनाशक जो आपके पेस्टिसाइड है इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, राइट? आपका जो रासायनिक खाद फर्टिलाइजर जो होते हैं, फर्टिलाइजर इस्तेमाल होने लगा ज्यादा। आज ना तो हाइड्रेशन होता है, कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसका रीजन ये भी सारे, ठीक? तो क्या हमने इसे कभी सोचा था कि इसका कोई तरह पहुंच जाएंगे? नहीं सोचते ना भाई, हमने उसको किया था अच्छे चीजों। अब वो कोई अपने एथिक्स को छोड़कर कोई जबरदस्ती केमिकल डाल देगा, कोई हमको खाना खिला रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन ये है कि बनाए, सारे जो पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? भाई आप सब्जी भाजी उगा लोगे, गेहूं चावल तो नहीं उगा सकते अपने घर में, किसी पे डिपेंडेंसी रहना। दूध लेते हैं, ठीक? दूध में हम उस जानवर को, जो गाय है भैंस है, उसको क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं पता है। के लिए बहुत सारे जतन होते हैं पैदावार बढ़ जाए दूध का, वो चीज तो हमको नहीं पता है। तो वापस अपनी ले आएंगे, हम चीजों को खराब नहीं बनाते, लेकिन सहूलियत में कभी कभी कोई चीज एक्सपेंड कर जाए तो बात अलग है। अब वो हो जाता है भाई, हम किसी चीज को, कोई भी चीज जो एडवांसमेंट है उसके बाद उसके लिमिट नहीं रखता। हम किसी भी बचपन में पढ़ा था कहीं पर, इंसान हम एक असंतोषी जीव है। क्या आज जिस पोजीशन पे हो, जिस भी कंडीशन पे आप उससे सेटिस्फाइड हो, आप आगे नहीं बढ़ना है, और ऐसा है आगे नहीं बढ़ना है, वही को नहीं रहना, कोई ऐसा है? हम जिस भी पोजीशन पे हम एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, करेक्ट? सिग्नल पे आके खड़े होता है, तो सिग्नल रेड को पहले गाड़ी बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, और ग्रीन पे गाड़ी बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। जब हमारा पेशेंस नहीं है, वो तो पेशेंस बात हुई। हम किसी भी चीज को ग्रोथ करना चाहते हैं अपने कैरियर में, सब में, जब इस चीज को ग्रोथ करना चाहते हैं तो हम चीजों को और ज्यादा एडवांस करते हैं। वो एडवांसमेंट कभी कभी हानिकारक हो जाता है, ठीक है? एक्सपेक्ट आंसर नहीं, आंसर सेटिस्फाइड हुई कि नहीं? लालची एग्जैक्टली नहीं है, लालची भी होता है। आज की डेट में ऐसा कोई भी इतना बंदा नहीं है जो बिल्कुल रिमोट रहता है, कोई ना कोई तरीके से इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है? आप फोन यूज करते हो, कॉल करते हो, ठीक है? एक एग्जांपल बताते हैं गूगल ने मशीन से कॉल किया, ठीक है? लेकिन एक कहीं पर एक बुकिंग के लिए होटल था, रेस्टोरेंट था, उसने हमें कॉल किया, रिसेप्शन में फोन उठाते हैं, हम लोग किसी भी जगह पे अपॉइंटमेंट लेते हैं तो रिसेप्शनिस्ट या जो ऑपरेटर होता है फोन उठाता है, वो अपना शेड्यूल देखता है, हमको रिजर्वेशन अमाउंट करता है, रिजर्व कर देता है हमारे लिए जो भी टाइम लगता है, करेक्ट? उसने फोन किया, जब हम फोन करते हैं तो यूजुअली क्या बोलते हैं, जैसे मैंने फोन किया, मैं फोन करूंगा तो क्या इस टाइम पे रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है? अब वहां से रिप्लाई आएगा, वो रिप्लाई के बाद क्या होगा कि वो कोई भी टाइम बताएंगे, क्या जरूरी है कि हम टाइम फ्री होगा या मुझे शूट करेगा, जरूरी है भाई? वो अपना कैलेंडर देख के बताएंगे,
अपना टाइम देखकर बनाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके टाइम पे मेरा शूट करे, हो सकता है कि दोनों को टाइम मैच करता हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है, करेक्ट। तो उसने बताया नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, उस टाइम मेरा ये करना है और उसने आज क्या देखिए रिजर्वेशन कर, बट उसको जो सेकंड हैंड में जो सर्विस के अभी भी यही पता था कि इस साइड में जो बात कर रहा है नॉट ह्यूमन बीइंग से दूर, ऐसा क्यों हुआ, कैसे कर पाए, क्यों इससे यूज करते हैं, एंड्रॉइड यूज करते हैं, एंड्रॉइड फोन है, ठीक है, मैक्सिमम पास एंड्रॉइड, ठीक, ये जो आपका एंड्रॉइड फोन है किसका है, गूगल, वो ओन करता है गूगल, आपका जितना भी है सारा डेटा उसके पास है, सारे सेंटीमेंट को एनालिसिस करता है, सेंटीमेंट क्या होता है, हमारे जो इमोशन हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज सेंटीमेंट, जो सेंटीमेंट को एनालिसिस कर लिया और उससे उसने सिस्टम डेवलप किया कि सेंटीमेंट वैसा ही वो बात कर सके जैसा कि वो सामने में पता भी नहीं चले। ये बहुत पहले जब एआई इंट्रोड्यूस हुआ था तभी ट्यूरिंग टेस्ट होता है, ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने टेस्ट किया, 3 बंदे रखे, ए बी सी, 3 अलग-अलग, ठीक है, ए बी और सी में से 2 ह्यूमन एक मशीन, अब इसमें से आपको ये बताना था कि वहां से रिप्लाई आ रहा है मशीन, आपको नहीं पता ए बी सी में से कौन ह्यूमन है कौन मशीन है, एक मशीन है 2 ह्यूमन है, अगर मशीन ह्यूमन जैसे बिहेव करके सामने वाले को कंफ्यूज करते तो आंसर ना करता है कि कौन मशीन है तो टेस्ट से पास जाता है, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमने ऐसा कर दिया, ठीक है, यही चीज प्रूव करके दे दिया गूगल ने, करेक्ट। तो आप उसमें बात करना बंद कर दीजिए, क्या काम है ठीक करने बैठक से बैठक कोने बात करना बंद करेगी, भाई आप यहाँ बात कर रहे हो, आप जब आपने आईफोन रखा है, सामने वाला के जिससे ही बात करोगे सबकी बात तो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वो जो आपका डेटा है वो जा रहा है, आप उससे आप कुछ नहीं कर सकते, या तो आप सिस्टम को बंद कर दो, ठीक है, ईमेल यूज करते हो आप लोग, ईमेल में लेटर को अटैचमेंट में कर देना, अटैचमेंट में लेटर में पीडीएफ को डालकर डॉक्यूमेंट में पीडीएफ को डालकर आप उसको मेल कर देना, ठीक है, या आपको उसके मेल आता है, ये उस अटैचमेंट को रीड कर लेता है, आपका ईमेल होता है, अटैचमेंट को रीड कर लेता है और रीड करने के बाद क्या करता है वो आपको सजेशन देता है, इसका रिप्लाई कैसे करना है, ओके आई विल बी देयर, आई विल डू इट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ऐसा कुछ तो देते हैं, टैब आता है उसको आप क्लिक करोगे तो जाता है, आप कुछ भी लिख रहे हो तो सजेशन दे देता है, सजेशन आता है कहां से, ये सारा चीज उसके पास है, उसके बाद अपना दिमाग पता नहीं, जहां पर कोई पर्टिकुलर बंदा भी नहीं बैठा हुआ है कि आपके रिप्लाई को हर किसी को रिप्लाई करते रहेगा, वो नहीं है ना, कैसा होता है, इसने इतने टाइम पे अपने सिस्टम को ट्रेन कर लिया है, दैट इज मशीन लर्निंग, कोई मशीन होता है सबसे पहले हमको ट्रेन करते हैं, हम उसको डेटा देते हैं, इसको ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद उसका टेस्ट करते हैं, जैसे हमारे पास डेटा सेट होता है, सपोज हमारे पास 50 से अधिक डेटा सेट, जब किसी एल्गोरिथम से उसको ट्रेन करते हैं, मशीन को हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने के बाद हम बोलेंगे कि ये काम तुमको करना है, जैसे आपको मूवी रिव्यू को करके बताना है, अच्छा है बुरा है ठीक है क्या है, ठीक है, अगर आप इसको करते हो और कैसे काम करेगा, सबको रिव्यू करेगा, सबको पढ़ेगा, वो ट्रेनिंग उसको दिया हुआ है, हम तो उसको 30,000 डेटा दे दिया कि आप पढ़ो, आपको समझ जाएगा कौन सा अच्छा रिव्यू होता है, मूवी का क्या बुरा होता है, ट्रेनिंग दिया, हमने उसको दिया 20,000 और डेटा दिया, अब आपको टेस्ट करके बताओ, हमको ट्रेनिंग नहीं किया, आपके पास ये है हाँ ना ये वो उसके बाद आपने क्या किया, आपने इसका 20,000 को टेस्ट करने के लिए दिया, 50,000 के डेटा में आपने 20,000 को ट्रेन किया, 20,000 को टेस्ट करने टेस्ट रिजल्ट आया कि ये 85% आपको करेक्ट कर देता है, 85 इज गुड इनफ, तो 100 में से 85% अगर आपको अच्छा रिजल्ट देता है तो हम लोग एक्सेप्टेबल, चलो 89% देता है, 89% आर रिस्पेक्टफुल टू द परसेंटेज फॉर एनी मशीन, योर रिजल्ट जो दे रहा है 89% को आप अच्छा फिर आगे एजुकेशन ग्रामर लिख रहे हैं, आप क्या हम लिखने के आपका जो रिव्यू है गलत
अब आपको ह्यूमन पैटर्न जैसे तुम पे साथ यहाँ पर जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं साफ कर देंगे कमेंट आएंगे जो आपके ई-कॉमर्स साइट पे है वो सारे के सारे उसको एक ना हो क्योंकि आप लोग टीम टू पे मैं सब खेलना करेंगे तो जरूर ऐसा ही नहीं हाँ आप ये समझो आपने कितनी ईमेल भेजे होंगे आपने कितने फोन कॉल किए होंगे आपने कितने मैसेज सारा का सारा डेटा वहां पर है तो उसके पास कितना बड़ा डेटा और जब इतना सारा डेटा नहीं होगा जब सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकता है तो कुछ हद तक ह्यूमन जैसे रिप्लाई कर सकता है आंसर कर सकता है ठीक है अच्छा सर्च इंजन लिखते सर्च इंजन सॉफ्टवेयर को व्हाट इज सर्च इंजन वो क्या करता है जो आप कीवर्ड देते हो बैक क्रॉल करता है क्रॉलिंग मतलब जैसे अब तक होते हैं विधा उसका डेटा इकट्ठा करते हैं सेम वैसे दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट कॉल्ड इज क्रॉलिंग वो वेब में सब जगह करता है टाइप होता है वहां से वो रिजल्ट को लेकर आता है आप इससे ज्यादा कौन सा सर्च इंजन यूज करते हो देखिए जो गूगल करते हैं याहू था इंडिया का भी गुरु.com के सर्वर था इंडिया का भी सर्च था क्योंकि इतने सारे डॉक्टर को है डॉक्टर को का एडवांटेज ये है कि आपका डेटा स्टोर नहीं करता अनलाइक गूगल सेफ होता है ठीक है ऐसा और भी है तो हम गूगल पे ही क्यों जाते हैं गूगल के सब पॉपुलर होने का रीजन क्या है नो नॉट ए क्विक फास्ट तो एक्चुअली हमको बेटर रिजल्ट होता है तो अगर किसी भी बेटर रिजल्ट पहले होता है ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट होता है ऐसा क्यों होता है जितने बार हम सर्च करते हैं उतने बार वो रिजल्ट देता है आपने कोई भी कीवर्ड सर्च किया सपोज आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखते हो उसके बाद ये देखता है कितने लोगों ने कौन से वाले को जैसे थर्ड नंबर पे जो था उसने थर्ड नंबर पे जो लिंक दिया फिर लिंक प्रोवाइड करता है आपको उसका ये कोई डट में से पूरा लिंक देता है एक हाइपर लिंक होता है जहां पर आपको क्लिक करते हो ओपन जाता है वो साइट करेक्ट तो आप उस लिंक पे जब क्लिक करते हो तो ये देखा कि थर्ड नंबर पे जो लिंक है ये सबसे ज्यादा बार यूज होता है तो क्या कि उसको कॉपी कर देते हैं इस तरीके से वो क्या करते हैं इतने बार हम उसको करते हैं उसके बाद वो ट्रेन करता है क्योंकि चैट जीपीटी है ये भी जितना चीज हम बोलते हैं उसके बाद वो क्या करता है उतने बार वो ट्रेन होता है तो ट्रेनिंग बंद नहीं हुआ और जितना ज्यादा वो ट्रेन होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा अभी आप बोलते हो कि मुझे ये चाहिए चैट जीपीटी बोलोगे आप जैसे बोलोगे आई वांट अ पीपीटी फॉर दिस साइट मुझे लिखना है तो इसलिए आपने बोला कि मुझे आर्टिकल डिटेल कौन क्या क्या होना चाहिए फिर आप उस कीवर्ड में सर्च करो क्या बोलोगे मुझे पूरा डिटेल चाहिए आप जैसा बोलोगे तो वेबसाइट पर रिप्लाई करेगा ठीक हर बार वो ट्रेन होगा हर बार वो नया रिजल्ट देगा कई बार रिजल्ट रिपीट होते हैं कई बार रिजल्ट आते हैं अब वो नहीं रिजल्ट अगली बार क्या करेगा जब दूसरा कोई उस चीज को करेगा तो उस रिजल्ट को बोलेगा नहीं मैं इस रिजल्ट को इसके अंदर मुझे फीडबैक मिला मोस्टली इसके लिए लोग बोलते हैं कि उनको पसंद है तो उस रिजल्ट को वो हटा बेटर में होगा ये कि जब तक जो सिस्टम है तो भी आप यूज कर रहे हो बेटर होते जा रहा है ठीक है डर ये है कि ये बेटर होते होते कोई ऐसा दिन ना आ जाए इतना बेटर हो जाए कि इंसान को बटन बना दे निकल राइट ये डर तो एग्जैक्टली हम ये नहीं बोलते कि हमने किसी ऐसे सिस्टम को बनाना है जो हमको मारने वाला है या खत्म करने वाला है या हमारे सिविलाइजेशन खत्म करने तो ये चीजें बनाने बनाने चलो थोड़ा सा जो वीडियो है उसको बढ़ाते हैं करते हैं हाँ? तो व्हाट इज द वेरियस टेक्निक एंड फील्ड ऑफ एआई
होता है आपको मशीन लर्निंग जो अपना काम नहीं करे वो ना करता है आपके चैट जीपीटी गूगल आप फेसबुक पे कोई वीडियो देखते हो या जो भी आप इस पे टाइप पोस्ट देखते हो आपको टाइप पोस्ट करेगा आप कुछ नहीं करते आप शेयर मत करो आप लाइक मत करो मतलब आप थोड़ा देर तक देखिए जैसे आपने कोई कॉमेडी वीडियो देखा आपने एक देखा कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हो उस चीज का एनालिसिस कर लेगा और नेक्स्ट टाइम आपको कॉमेडी वीडियो से याद करेगा आपने कुछ नहीं किया आपने कुछ टाइप किया तो आपको कुछ करना तो ऑटो प्ले हो जाता है ना करेक्ट तो वो ऑटो प्ले होता जाएगा नेक्स्ट आप जैसे कॉल करोगे तो आपको उसी टाइप की वीडियो आता अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको जाना होगा बोलना पड़ेगा या पोस्ट तो वो आपको हटा है पता है क्या करेगा यहाँ पर कोई पीछे बंदा तो नहीं बैठा है ना कोई तो कर रहा है अगर किसी के पीछे तो नहीं हो सकता ये क्या करता है किसी चीज समझता है मशीन समझती है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को प्रोवाइड करता है उससे पहले बहुत सारा ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करने के बाद भी वो ज्ञान लेना पसंद बोलते हैं ना कि इंसान को जहाँ से मिले ज्ञान बटोरना चाहिए जिसे करना चाहिए ये बस ही करता है इतना ही उम्र है उनसे ज्ञान लेते रहेगा ट्रेनिंग लेते रहेगा ट्रेनिंग लेते लेते वो इतना एडवांस हो जाता है आपको आपको बिना पूछे आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो पूरा फिर एनएलपी जो भी आपके सिस्टम होता है जैसे एलेक्सा गूगल डॉट ऑटो मैनेज होता है आप जहाँ पर जो आपको रिजल्ट देता है या मोबाइल पे आप करते हो राइट वो कैसे काम करता है तो हम बोलते हैं आप कैसे बोलते हैं हम टाइप करके नहीं दे रहे हम जो बोल रहे हैं इसको रिकॉग्नाइज करके रिजल्ट देता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नॉट जस्ट लिमिटेड टू द any particular language like English चलो कॉमन यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश में मल्टीपल लैंग्वेज में इसी के मतलब वो ह्यूमन अपने लैंग्वेज में बोल रहा है अगर उस चीज पर इसका उसका ध्यान दे दे दैट इज ये मतलब एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फिर कंप्यूटर विजन किसी भी वीडियो या इमेज को एनालिसिस करके पर रिजल्ट देना या एनालिसिस करके ये करना एक एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कि कोई वीडियो देखकर आप चला सकते हैं तो ऑटोमेटिक कार है ठीक है वो कैसे करता है कैमरा लगाता है कैमरा से ही काम करता है एक सिस्टम आता है एग्जैक्टली ड्राइवरलेस कार को पॉपुलर नहीं हुआ है अभी फास्ट नहीं हुआ है अगर कंपनी से बता रहे हैं ड्राइवरलेस कार इसके कंप्लीटली इस जगह पे नहीं है कि हम थोड़ा उसको दे सकते जैसे भारत में तो आप उनको नहीं कर सकते जहाँ चल रहे होते हैं तो आप लेफ्ट से भी निकलेगा राइट से भी निकलेगा सब जगह इतना सिस्टमेटिक कोई नहीं यहाँ पर वर्क करने चला आप कितने भी अच्छा चले आप साथ चलने वाले खराब है तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है आज से 10 साल पहले से गूगल अपने ड्राइवर के साथ में इसकी सर्विस लगातार चलते रहते अभी बंद हुए नहीं हुए कोई क्लोज एनवायरनमेंट में आपका चलते रहता था टोयोटा की अभी प्रीमियम एक आती है हाइब्रिड मॉडल है तो उसको उसमें दे रखा है वो अपने से सिस्टम चलते रहते हैं तो कोई इतना नहीं है सिर्फ टेस्टिंग ऐसे और भी मॉडल्स हैं आज के डेट में भारत में बहुत सारी गाड़ियां हैं जो सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलती है बोलते हैं एडास ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ये ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम ठीक है ये क्या करता है आप जैसे आप ब्रेक नहीं लगाएंगे आपको समझ आ गया आपको कट करने वाला बताएगा आप मुड़ने वाले का आपको बताएगा कि मुड़ना चाहिए कि नहीं मुड़ना चाहिए कुछ एक महारथी है हमारे देश में ऐसे महारथियों की भी नहीं है जैसे एक्सयूवी 700 जो है उसमें तो लोग क्या करते हैं ड्राइवर सीट की बात कर जाते हैं और वो छोड़ देते हैं चलाने के लिए एक बंदे ने किया कि गाड़ी को करके छोड़ना था कैसे वर्क करता है भाई कैमरा है कैमरे को चाहिए ये क्या करेगा आप लोगों ने देखा है रोड पर पट्टियां बनी होती है पीछे पट्टी बनी होती है राइट साइड में ये उस लेन को देखता है अगर लेन नहीं है तो उस चीज को समझेगा तो बाउंड्री नहीं पता है अगर तो अपनी बाउंड्री नहीं पता है तो मेंटेन कैसे करेगा वहां तो लेन नहीं दिखता वो थोड़ी जगह टॉप करूंगा थोड़ी भी गाड़ी से हो करके नीचे आ ठीक है तो ये दुष्प्रभाव है आप जब किसी को कारण में पड़ सकते
मशीन का अपना एक लिमिटेशन कंस्ट्रेंट तो है भाई, जिस तरह दिखेगा उतना ही करेगा। आप अचानक कोई चीज आपका है तो आप वहां पर अपना डिसीजन ले सकते हो। मशीन नहीं डिसीजन लेगा जिस तरह उसको सिखाया हुआ, तो आप नहीं सिखाओगे। बस ऐसे रोबोट बना जैसे बहुत सारे रोबोट आते हैं, नॉट ओनली वो रोबोट पे नॉट ओनली कर सकते हैं कि वो एक ह्यूमनॉइड जो आपका एक सेल्फ कंट्रोल रोबोट होता है, ठीक है, तो वो भी एक तरीका आपका है। उसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर विजन हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज जो भी आपका ह्यूमन जो भी बोलेगा वो आपको एनालिसिस करके उसका करेक्ट करता है, वो आपका नेक्स्ट टाइप मशीन लर्निंग पे कि एग्जैक्टली मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो ट्रेन करें, ट्रेनिंग करने के बाद हम उस ट्रेनिंग के ऊपर उसको अपने से डिसीजन लेने, और ये ट्रेनिंग के बाद जैसा रिजल्ट आने जा रहा है ये अपने आप को प्रूव करें। मतलब ऐसा सिस्टम जो लर्न करता है, दैट इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग। जिसका लर्निंग एंड ना हो दैट इज द मशीन लर्निंग, ठीक है। अभी जो हमने एग्जांपल दिए थे गूगल के, फेसबुक के, दो काफी एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। जो डेटा ले जाएगा और उस डेटा को लेकर रिव्यू करता जाएगा, रिव्यू करके उसका रिजल्ट आपको बेटर रिजल्ट करवाने के लिए करता है, दैट इज मशीन, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में क्या होती है, आपका ट्रेनिंग रहेगा, ट्रेनिंग लेने के बाद आप डेटा से लर्निंग होगा। कोई भी मशीन है उसमें ट्रेनिंग का आपको डेटा देना है। आप किसी भी रॉन्ग मशीन को नहीं बोल सकते कि वो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको उसको डेटा देने होंगे, वो डेटा पे ही एनालिसिस होगा। आपको सिखाना पड़ेगा, जैसे बचपन में सिखाया गया था, अल्फाबेट सिखाए गए थे, अक्षर सिखाए गए थे, तब हम सीखे, करेक्ट। वैसा ही आपको मशीन को भी उसी तरीके से सिखाना होगा। तरीका अलग होता है, प्रोग्राम आप करते हो, प्रोग्राम करते हो, तो पाइथन में आर में जो डेटा एनालिसिस होता है इसके लिए आप करते हैं पाइथन वर्सेटाइल लैंग्वेज बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इसी को समझते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग बेसिकली दो टाइप की हम लोग दो के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। पहला होता है आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में दो टाइप की लर्निंग है। पहला होता है टेबल, दूसरा होता है अनलेबल्ड। टेबल का मतलब होता है जहां पर जो भी डेटा है वो आप किस चीज का डेटा है उसका मतलब होता है। जैसे आपके पास लिस्ट है, एक की उसके ऊपर हेडिंग नहीं है, रोल नंबर है, रोल नंबर रहेगा, एज है, एज रहेगा, लेवल। दूसरा होता है इसमें कोई लेवल नहीं रहता, जहां पर कोई भी डेटा होगा तो कोई लेवल नहीं, आपको कुछ समझना होता है। कैसे करेंगे, जैसे ये जो है आपका ये लेवल डेटा, ठीक है, डॉग डॉग कैट कैट, कैट लेवल जो सब ऊपर के ये डॉग है, ठीक है। क्या आपको समझना है, मशीन को समझना है, मशीन कैसे समझेगा कि वो डॉग है। पहला तो लेवल, पहला तो सुपरवाइजर, सुपरवाइजर लर्निंग कैसा रहेगा, सुपरवाइजर लर्निंग का मतलब होगा कि वहां पर वो लेवल को देखेगा, उस चीज को अपने दिमाग में रखेगा कि डॉग है, मतलब
इसके नीचे लिखा हुआ है डॉग मतलब ये डॉग होगा, ठीक है। ये भी है। अब इसमें क्या है, इसका वेट लिखा हुआ है 18 पाउंड 14 पाउंड, इसका वेट लिखा हुआ है। ये समझ में कि इस डॉग का ये जो है इसका वेट है 14 पाउंड है। थर्ड वाले क्या है, अब इससे क्या समझना है, दैट इज अनलेबल्ड डेटा। थर्ड वन इज अनलेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा का मतलब क्या होगा, जहां पर उसमें कोई भी स्पेसिफिक टीम या ट्रांसपोर्टेशन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको लेना है तो समझना है। अब जो आप ये कंप्यूटर में क्या करते हैं, वो ये देखेगा इस सिस्टम नाम है, आगे करते हैं, मूव करते हैं, इस चीज को समझेगा और एनालिसिस करेगा, हाँ ये काम होना चाहिए, ठीक है। ये जो रहता है प्रोबेबिलिटी बेस्ड कि कोई चीज की तरह मैच कर रहा है। जैसे मेडिकल इमेजेस जो है क्या वो स्पेसिफिक डेटा होता है, जैसे एक सिटी स्कैन है, आपके पास एक एमआरआई है, दिमाग का एक फोटो है, तो आप देखिए कोई डेटा दे सकते हो उसमें, कोई लेबल होगा नहीं होगा, आपको उसमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उस स्ट्रक्चर में कितनी क्या है वो हाई लेवल, आप उसको मैच करोगे कि यहाँ पर कोई सेल है, कोई ऐसा कोई पार्ट तो नहीं है जो आपका जो नॉर्मल नहीं होना चाहिए, ये कैसा होगा। अब दो में इस तरह कोई नॉर्मल इमेज और एक एब्नॉर्मल इमेज, आप इन दोनों को चेक करोगे तो कौन सा चीज है जो नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आप ये देखते हो कि 10 जो चीजें हैं इनमें सब में नॉर्मल टाइप के, एब्नॉर्मल वाली में छोटा सा स्पॉट, ठीक है। तो ये रहेगा अनलेबल्ड डेटा रहेगा। अनलेबल्ड डेटा क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग दो टाइप की मशीन लर्निंग, एक मशीन लर्निंग कौन सा हो गया, जिससे आप उसके लेवल स्पेसिफिक दे देते हो, नाम है मतलब उसके जो जा रही है और नाम, कोई भी डेटा सेट जो हम देते हैं, एक्सेल देखा है लोगों ने, एक्सेल किस तरह से टेबल्स बने होते हैं, रो और कॉलम। रो मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक्स पढ़ा है ना, रो में जो भी चीजें हम रखते हैं, जैसा आपका मार्कशीट होता है, आप एक सब्जेक्ट लिखा होता है तो बाजू में कितना पासिंग मार्क्स, कितना टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स कितना है, आपको कितना मार्क्स मिला है, ठीक है, मार्क्स ऑप्टेंड रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा आपका, आपका जो ग्रेड है डिवीजन के साथ, करेक्ट। ये जो चीज है आपके पास, अब आप देखते हो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब ये रो कर सकता है, ये एक पर्टिकुलर चीज का डेटा है। जैसे सुनील ये हो गया, ये क्या हुआ, नील का, ये रहेगा आपका टॉप पे नील, तो नील का नील लेवल क्या हो गया, नील नेम वाले सुनील के बाजू में जो कॉलम है वहां पर लिखा हुआ है एज, वहां पर नीचे भी कोई फिगर लिखा हुआ रहेगा एज, उसके बाजू में रहेगा जेंडर, ठीक है, जेंडर के नीचे में जेंडर लिखा होगा, इसके बाद रहेगा क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन वाला जो हेड है उसके नीचे क्वालिफिकेशन रहेगा। तो ये क्या रहेगा, सुनील का सारा डिटेल जो ऊपर में आपके पास सिर्फ वो क्या रहेगा उसकी, ठीक है, समझ में, दो साल की लेवल। तो जो आपका सुपरवाइज करता है ये उन लेवल्स पे पड़ता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग तो रहता है जिसमें कोई स्पेसिफिक लेवल नहीं है, तो आपका जो डेटा रहता है इस डेटाबेस से आपको समझना होता है, उसका एनालिसिस करना होता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है। फिर आता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, जो कॉम्बिनेशन होता है या रिव्यू या जो आंसर का जो कॉम्बिनेशन होता है आपका सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लेवल और अनलेबल डेटा का होता है। आपको सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग में अगर हम किसी भी डॉग नेम दे दिया तो क्या बोलेगा, फॉर डॉग है किसी का एक स्पेसिफिक टाइप का दिख रहा है, और अगर हम कोई भी फॉर डॉग तो वो डॉग सुपरवाइज्ड लर्निंग कैसे करेगा, सबसे पहले हम उसको देंगे नंबर करेगा और वेट करेगा और उसके बाद वो प्रिडिक्ट करेगा जो भी वेट है वो क्लियर। हमने क्या किया, मशीन लर्निंग का काम करता है टेस्ट, सबसे
पहले आप ट्रेन करोगे, आप टेस्ट करोगे कितना रिजल्ट देता है, थर्ड टाइम पे आप क्या करोगे, आप उसको थर्ड टाइम पे आप देखोगे, आप उसको अब एनालिसिस करने के लिए कोई डेटाबेस बनाना है, जब आपने ट्रेन किया है उसके अकॉर्डिंग वो उसको रिजल्ट। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब होता है आप उसको एग्जैक्टली नहीं बोलते, वो सिर्फ ये बोलेगा हमको इतना पता है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन इसके होने का चांसेस है, इसके होने का चांसेस ये डॉग भी हो सकता है, ये कैट भी हो सकता है, मैंने उनको अभी तक नहीं बताया कि तुम डॉग हो कि कैट, ठीक है, ये बोलेगा भाई ये डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, इस चांसेस है कि डॉग है, क्या चांसेस, मतलब मैं बोलता हूँ 49% के डॉग हो सकता है, 51% कैट हो सकता है, लेकिन जब चीजें हम लोग किसी चीज को लेवल जैसे मेडिकल इमेजिंग की बात करते हैं, इमेजेस होते हैं, वहां पर एग्जैक्टली कोई डेटा वाइज बात नहीं, डेटा वाइज बात होगा कब होगा, जब डायग्नोसिस का रिजल्ट है, जब ब्लड रिपोर्ट डेटा होता है, उसका एक स्केल होता है, कोई भी चीज है हीमोग्लोबिन आपका 10 दिन से नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसका एक स्टैंडर्ड है, उसके नीचे आएगा तो वो आपका कम है, बस ये बता सकते हैं, लेकिन यहीं पर अगर एक्सरे है तो एक्सरे का एग्जैक्टली वहां पर कोई डेटा नहीं होता, फिगर नहीं होता, करेक्ट, एक्सरे में आपको क्या दिखता है, चीजें कितनी चीजें खराब है, क्या वो नॉर्मल है या नॉर्मल, अब मेरा टेक्निक क्लासिफिकेशन रिग्रेशन ये आपको सुपरवाइज करने का क्लासिफिकेशन क्या करता है, क्लासिफाई करता है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट फीचर्स होते हैं, इनको क्लासिफाई करता है, रिग्रेशन मॉडल नेक्स्ट देखिए, रिग्रेशन आपको रिग्रेशन आपके पास जो भी डेटा पॉइंट रहते हैं उससे कितना सिमिलर हो रहा है ये आपको पता है, ठीक है, होता है रिग्रेशन, रिग्रेशन आपका होता है ग्राफिकल, एक ग्राफ देता है आपको, आपको कोई भी रिजल्ट चाहिए जिससे आपका रिक्वायर्ड डेटा पॉइंट ये दिया आपको चाहिए, तो आप ये सारे डेटा पॉइंट लिख कर अब इसमें अगर एक फॉर्मूला बनाते हैं या आप बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन है उसका होगा करता है, हम कितने उसके लाइन के पास में हैं वो उतना उतना आप जो एक ड्रॉ करेंगे उतना डेटा पॉइंट आप उसके पास लाएंगे, हालांकि ये आपका टेक्निकल ज्यादा होगा, इसको मैं इसको बता नहीं सकता हूँ कि जब आप उसको अप्लाई करोगे कैलकुलेशन तो तब आपको इस चीज को इजी रहेगा, अभी नहीं सिंपल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, ट्रायंगुलर वेक्टर, सुपरवाइज्ड लर्निंग की टाइप होते हैं, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, मैं आपको क्लस्टरिंग सिर्फ पे जहां एब्सोल्यूट रिडक्शन में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास स्टूडेंट का डेटा, अब उस स्टूडेंट के डेटाबेस में आपको ये जो जैसे एक कंपनी है उसको रिक्रूटमेंट करना है, उसके बाद ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि उस टाइम से उसको मेल है, ठीक है, आप उससे ये नहीं बोला है कि उसको जो कैंडिडेट चाहिए मेल होना चाहिए, फीमेल चाहिए, तो उस डेटा में से अगर मैं जेंडर वाले फॉर्म को हटा दूं तो उसके ऊपर पड़ेगा, यूजुअली होता है जब भी हम लोग तो मशीन लर्निंग ज्यादा डेटा को आप ट्रेन करोगे उतना बेटर रिजल्ट, ठीक है, अब जितना बड़ा डेटा रहेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको करने में, उतनी ज्यादा
आप बता सकते हैं। एक डिवाइस लॉन्च किया है विजन करता है विजन एग्जैक्टली मतलब किस टाइप का डिवाइस है ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है तो एग्जैक्टली सामने नहीं है लेकिन आपको सामने ठीक है जार्विस जो है जो टोनी स्टार्क का मतलब आयरन मैन को पढ़ता है वो क्या करता है चीजों को हवा को ऐसे करने लगता है जैसे दिखाता है मूवी में विजन में आप जब देखते हो तो आपको कोई चीज जो है ना बाकी डिवाइस के लिए तो आपके पास वो हवा में दिख रही है ठीक है और उसका आप प्रूफ करते हो उस सेंसर आपको गेस्टर को तब कैमरा आप जैसा हैंड गेस्टर करते हैं अकॉर्डिंगली रियलिटी आप भले ही तरीके से जावी से जो हमने प्रैक्टिकल बनाया था ये जो वो वहां पर क्या ये का एग्जैक्टली अभी कोई नहीं है हम लोग अगर इसकी बात करें कि हमने सर्वे ओके हमने अभी जो किया है कि हमने एक्सप्लोर किया ही नहीं और दूसरा चीज अभी जो हमने किया है तो यहाँ पर कोई भी चीज ऐसा नहीं जो कंप्लीटली ऑटोमेटेड जब हम चीजों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो वो हो जाता है लेकिन आपको की बात की तो ठीक है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के एडवांटेज जैसे लोग वो जाता है एक प्रॉब्लम जो मैंडेट रिटेल में एक डिवाइस फाइनेंशियल रिटेल में जितने भी रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर को बनाता है बिल्कुल जैसे वेट में आता था बोल रहा था मैंने लगा था ऐसे दिखता है बोला तो वैक्यूम क्लीनर जाता है ऐसा करता है वहां पर स्टार्ट है अच्छा वो वैक्यूम करके वाले किनारे जाकर बैठ जब आप वो ये यूज करेगा और हमने सेट दायरा के पास हम कुछ मांगे ऑब्वियसली प्रोडक्ट पता कैसे चलेगा अरे आपका आई बोल रहे थे प्रॉब्लम क्या है कि जरा दायरा ने क्या किया वो हमारे टाइम प्रोडक्ट और हमने बनते पूरे वर्ल्ड में मार्केट फैला हुआ है हम लोग कितना भी चाहें जब चाइना की कोई भी करेंगे सबके घर में हर किसी का कोई चाइना हो चाइना नहीं बनाया हमारे जब हम बिल्कुल बात करें तो ठीक है तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है बहुत सारे फैक्ट्रीज या आपको स्कूल में कितने करता है आपके पास आगे और पीछे वाला कैमरा नहीं किया अगर आपको आप जितने भी इससे यूज कर रहे हो जितने भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो आप इस सभी एप्लीकेशन के लिए जो उसके टर्म्स कंडीशन है सारे जो आप जितने भी एप्लीकेशन किया क्या आप इसको पढ़ लो आपको पता है कौन सा डिवाइस आप कैसे कैमरा यूज कर रहे हैं कौन सा एप्लीकेशन
अपनी अपनी जानकारी जानकारी अदरवाइज हम उसको जो भी चीज आपको गूगल पे यूज करते हैं, ठीक है, और फिर बहुत सारे तो बहुत सारे चीजें हैं आपको बोलो कि मुझे चेक नहीं करना है, आपका वो डिजाइन अगर आप करते हो तो आपका ऐप ओपन नहीं होगा, ऐसा बहुत सारे एप्लीकेशन, ठीक है, आपका किसी टाइम पे आपका कैमरा ऑन है ऑफ है, आप कैसे जानते हैं? कोई आपका रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, कंपनी आप किसी भी कंपनी मोबाइल में उसमें आप एप्लीकेशन कंपनी कर रहे हो और आप उसको क्या कर सकते हैं क्या नहीं देख सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं तो वो परमिट करना ही पड़ता है, या उसको यूज नहीं कर सकते। सेम वैसे ही आप वेबसाइट यूज करते हो, आपके लैपटॉप का जो कैमरा है ये यूज वेबसाइट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां से भी आपका जो होता है आप वेबसाइट को ओपन करते हो, आपका वो कैमरा मान जाएगा, आपकी सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी, आपको होता है हर स्टेट तक नहीं कर सकते, बाकी होता है एक होता है आपके बीच में एक कैमरा होता है ना, उसका सामने का एलईडी होता है, वो हम जरा समझ जाता है, लेकिन फिर एलईडी नहीं है फोन में एलईडी नहीं होता, और ये स्टार्टिंग वाला होता है, वहां पर पहले जो भी चीज है ना हर चीज का कोड कोई चीज नहीं कोड नहीं, ठीक है, हम इतना भी करेंगे कि वहां पर जो इंस्ट्रक्टर में बैठा हुआ है वो सभी करता है, आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको कर, दैट इज द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं उसकी भी बात कर, आप इतना भी कर लो, हालांकि हम लोग जैसे जो भी जानते हैं वो लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन जितने भी करते हैं तो कंप्यूटर पर देखते हैं, ठीक है, जो लोगों के कॉन्टेक्ट से होंगे जब अब तक होता है जब ये होता है बच्चों के हाथ गेम सॉल्व करने में बनाते हैं, यस 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 वो सब चीज करते हैं, लेकिन गेम को कॉन्टेक्ट से क्या लेना देना है, अरे आप उसमें से कॉन्टेक्ट शेयर करते हैं, आप उस कॉन्टेक्ट जितने लोग हैं सारी सारी करते हैं, और खासकर कब होता है कि वो किसी का मतलब उनके हाथ में होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज को नहीं समझते, जैसे घर में वेंडर्स होते हैं, बड़े वेंडर्स हैं, ये वो पैसा नहीं समझते, अगर उनके हाथ में भी जाता है तो वो हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, चीजें आती हैं इस टाइप की कि बैंक फ्रॉड हुआ, लिंक को क्लिक करते ही हुआ आपके सही, आपको उसके लिए एक्सेस करना पड़ता है, फिर चीजें लोग बोलते हैं मुझे फोन आया आपको अपने से इनिशिएट करना पड़ता है, आपको या तो देनी पड़ेगी या आपको कोई बटन क्लिक करना हो, आपको कई बार टाइप करना हो, डायरेक्टली वो से करना होगा, ये नहीं है, ये उस बात है वो एग्रीकल्चर बंदा ऊपर से बंदा अंदर डिस्ट्रिक्ट तक कोई नहीं, बोलते हैं फाइट आता है कि हमारे पास जो पैसे हैं कि आप कंप्लेंट होता है कि आप रोटेट और मतलब करते हैं, यूपीआई में होता है जब यूपीआई तो पर्सन टू पर्सन पे होता है इमीडिएटली, हाँ कोई पोर्टल करते हो पेमेंट गेटवे से देता है, आप जब पेमेंट करते हो आपका सारा जो है आपको परचेज किया वो चलेगा, लेकिन आपको पता है वो उसके पास जो वेंडर है उसके
इसे करने से क्या होगा वहां पर स्पीड आपने सोचा नहीं था तो बोला कि इसका चल कीवर्ड वो पासपोर्ट है Where very informative knowledge for I would like to request Sir Siddhartha sir. Present operator is not there. Right on sir. Type by Harsha Vandana ma'am for for providing us the information, for providing us the information knowledge for our students about AI and machine learning. And thanks to all the participants and all the faculty members from Disha College and and from Webber College who attend this center. Okay, thanks to all of you. इसके बाद हमारा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट होगा यहाँ पे देखो मैडम चालू बैठो लेंगे नेक्स्ट सेशन ऑनलाइन सेशन है 40 मिनट्स का होगा हमें यहाँ से आपको बैठना है फिर उस लिंक को ज्वाइन करना है कहाँ जा रहे हैं बेटा आपकी सेकंड सेशन की अटेंडेंस डाली है ओनली 40 मिनट्स का आपका सेशन है आप ज्वाइन कर लीजिए देन उसके बाद आप करो ना बैठो तो एक्सेप्ट करो ना लिंक तो भेजा कौन सा नंबर है वो है वो आ जाएगा बैठो बैठो अभी आपके लिए
चाय का अरेंजमेंट भी चाय बिस्किट का आपसे लेंगे और ऑनलाइन भी आप लोग मिलेगा ज्वाइन करेंगे और इसका सर्टिफिकेट हमारा ऑनलाइन आप ज्वाइन करेंगे। अच्छा आप कर रहे हैं ना अभी? बताएं वही तो। Hello. Except us. Can someone please let me know if I am audible? No, let you open it. Am I audible? Hello. दिख भी कुछ नहीं है, तो नहीं दिख रहा। मैम का आंसर नहीं आ रहा है, आप पूछ आपका कैसे भी मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है इसमें। हाँ यही तो है। Ma'am, I am audible. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. A very warm welcome, ma'am. I would like to invite our second speaker, Ms. Park Department, GH, Regional College of Engineering, Nagpur. Welcome, ma'am. Thank you so much. Just yes, ma'am. आप start कर सकते हैं. My account as well. Kindly allow me to unmute from there. तो मैम को अनम्यूट करना है क्या? देखो किसका है? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ मैम, आपको आवाज आ रही है? भी बोलता है कि कांट डाउनलोड है। मैम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैम। Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Screen is visible, ma'am. So first of all, can I know that who are the audience? Hello. क्या मैम आप again मैम ask me. Just give me a minute. Yes, मैम आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। वो है सर, क्या ही नहीं। आपने कोई ज्वाइन करने के लिए मनी आज मैम आपका माइक बंद है क्या? हेलो हेलो मैम आपका माइक बंद है क्या? Yes, ma'am. Actually, I am logged in from 2 devices. Okay. Yeah. Can you hear me now? Yes, ma'am. Okay. So let's begin up. First of all, I would like to know who are the audience. Are they students? Yes, मैम कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी हैं दिशा के और विप्र के। Hello. Okay, so let's begin up. So our today's topic is Introduction to Cloud Computing to AWS. So
Here are the table of content. Can anyone tell me if they are able to see the screen? Hello, I'm not getting any response. Yes, ma'am, आपकी आवाज आ रही है. Okay. इसके हमारे जितने सकते थे पैटर्न रखेंगे. So let's begin up. The table of content for today. Here is the introduction. First, we will go for introduction to cloud. I'll be explaining you what's the basic of clouds, what is cloud, what we can do, and everything. Coming to the same point, we'll be describing how websites work, what is server composed of, and then we will be comparing the traditional and the cloud infrastructures. Followed by that, we will be having deployment models of cloud. Then we will go for different types of cloud computing. Again, we will also be discussing the benefits of cloud, different cloud service provider currently in the market, and AWS, where it stands for Amazon Web Services. We will be discussing the evolution of it, its global infrastructure, where in the globe they have their data structure, the data centers and all, and then the popular services of AWS. Finally, we'll be concluding the session. So before I start, I would like to explain what cloud computing is. So in today's world, if you don't know what cloud computing is, that you should know that everyone, those who are having a smartphone, they are using cloud computing. By default, if you are having a Gmail account or any mail account, it means you are using cloud computing services. Let me tell you a few examples. Those who are having phone backup, those who are taking phone backups every day over Google Drive, we get some messages from Google that 1 year ago you were having these moments. Google used to show us some videos, some photos. There is nothing but this is one of the cloud service. All the photos are backed up in clouds, and somehow Google or any other cloud service providers, they are trying to sell their services. So basically, if you are going to store every image daily, ultimately in years or with passage of time, you are going to use memory. So in this way, you are going to use the storage service of cloud computing, and later on, after 10 years, let's say, these moments will be very precious for you and you will be ready to pay for it. So once after your phone memory is full or you are not having those memories with you, only Google Drive is having that, then Google Drive, they will be charging for you. And of course, you will be paying for it. So this is one of the storage service. That is what I have discussed with you. So coming to the slide, cloud computing is the delivery of computing services for internet, including services, storage, databases, networking, storage, software, analytics, and more. So let me explain you. Whenever there is a big function in our home, suppose let's say for a marriage or any other gathering, we are conducting some event, and in that we have to arrange food for around 100 or 200 people or more than that. Do we do it alone? Do we do everything from the scratch? Sometimes we used to contract someone. They will be preparing, they will be delivering everything. Or sometimes what we do, we take in rent some of the resources, we use it, let's say for utensils, for the chairs, tables, etc. And then we return it back to the vendor. The same happens in cloud. Suppose you are going to start a company and you are sure that after developing the software or the application or whatever things you don't need them anymore. So if you need 100 computers for developing a company, are you going to buy everything?
Of course, the answer is going to be no. You're not going to buy everything from scratch. Of course, you are going to hire some people, some resources who will be working on it. But the things like the laptops or the computer, RAM, storage, memory, databases, all these things you can rent. You will be renting this, and once you are done, you will be free for, you will get rid of it. You will just use the application. Timely you need, suppose you need 2 system, 3 system, whatever, you will be keeping that with you. The rest of the systems, you will release them. So this will be cheaper in cost. Of course, it will be scalable. This is going to be easier for the users. And what the cloud service providers, they do at one place, they will be keeping all the systems, let's say for 1,000 systems, they will be keeping them. They will be accommodating their RAM, their system, their operating system, everything they will be having. And suppose I'm using it from 9 to 12. Somebody else is there who is going to use the same resource from 5 to 8 in the evening. So same resources, they will be renting it to different clients as per demand. So in this way, they will expand their business. Your work will be done in cheaper cost. And we get benefit of the cloud computing. So this is a brief explanation of what cloud computing platform is actually. You will have your own system. You will be working with your single system only with online services, and everything you will be renting from the vendors, that is cloud service providers. And once you are done with it, you have to pay only for the period for which you are using it. That is, we call it pay as you go pricing. Once you are done, you don't need to pay for it. You are free. So you can provide exactly the right type and size of the computing resources you need. You can access as many resources as you need. Simple way to access servers, storage, databases, and a lot of application services. So there must be some questions like how cloud works, which companies are the leading cloud service providers. Of course, you know about Google. I'm sure everybody here will be knowing about Google. Google kya hai, sabko pata hai, Google cloud service provider. But there are some other vendors also who are very popular and they are the market leaders. I'll be showing you those things here. And what are the services they can provide? Just like I said, that Shadi Wala Kiraya Bhandar, they can offer you what services? You will be looking for their list of services. Are you going to provide me everything? Are you going to provide me just the utensils? Or are you going to provide me the chairs? Similarly, for an IT company, it works in the same basis. Are you going to provide me just the systems, the operating systems as well? Or you are going to make the complete application for me and I just need to use it? It's the same thing. How much you have to pay? You have to look for that, which is more feasible for you from your point of view as per your need that you will be choosing. So I said that there will be data centers and the actual servers will be placed there and you will be working through a network. You will just be requesting it and then the data centers mein jo servers honge, they will be responding back. This is how a website works. Whenever you are going to type something, let's say www.google.com, I used to do that. But then which servers is going to respond as per that the network will decide and then the client will get back the responses. This is how cloud works. The actual data centers are not everywhere. If you are sitting in one place in Raipur, doesn't mean that within 10 kilometers, the actual data center is. Maybe you are using the data center that is 10 countries apart from you. So it is the network, it is the internet that is going to connect. And all these things work with the help of IP addresses. Of course, our work is not to discuss on IP address here. This is how the cloud service actually works. So let's see the next slide. I told that the server will be there. What the servers are actually? Servers are actually the real systems which we are going to use. So a server will have the actual brain which works, that is the CPU, central processing unit. CPU, often referred to as processor, is the brain of the server. It performs the actual computation task. Just a minute, yeah.
It performs the actual computation tasks and executes instructions. CPUs include number of cores, architecture, is the server's processing power. Next comes the RAM, that is the random access memory. This is the primary memory of the server used to temporarily store the data. It holds data that CPU needs to access quickly. Of course, the size of the RAM impacts the service ability to handle multiple tasks simultaneously and affect घर में बैठने के लिए आप लोग घर में बैठ कर रिसीव करने के आए हैं क्या यहाँ पे? storage. The server requires storage for persistent data storage. This includes hard disk drives, SSDs, or solid state drives for storing operating systems, applications, and data. Storage capacity can range from terabytes to petabytes depending on the service requirement. So whatever you need, you can rent only that much as per your requirement, so that you have to pay as you go. Databases are fundamental components of many software applications and systems. They provide a structure and organized manage and retrieve data. NICs, network interfaces cards. They enable server to connect to a network. They provide the necessary network connectivity, such as Ethernet ports, to allow data communication between the server and other devices on the network. So, suppose previously, just when there was no cloud service, suppose somebody wants to build a company, he will start from, he will have just 2 computers or 3 computers. The company expands. Now he will have 10 computers. He cannot stay at home now. Now he will be renting an office, a building where there can be sitting arrangement for hundreds of people. Of course, even that is not okay. Then what he will do? He is going to have some data center at one place, just like a garage. He is going to have lots of computers over there. And then he is going to use it. But currently, with the help of cloud, we have cloud service providers, due to which we are able to do work from home. Of course, the big companies, even they are integrating through cloud, because of which people sitting at home and they can integrate with all the applications, with all the services, and they can work together. So in this way, the cloud infrastructure has actually turned the structure of company, office, infrastructure, actual data structures, everything. This is the impact of cloud on the actual infrastructure. Now, let's see the deployment models. There are 3 different deployment models of cloud. One is public cloud, private cloud, and hybrid cloud. So what are these public cloud, private cloud, and hybrid clouds? Of course, if I say from the name or from the figure, you can see that public cloud infrastructures and services are owned and operated by third-party cloud service providers. Resources are shared among multiple organizations or users. Cost-effective, scalable, ideal for applications with variable workloads. And here I'll give you some examples like AWS, Azure, Google Cloud Platform. They are all the examples of public cloud. Coming to the next point, private cloud. Here you will be making a small cloud for your own, and of course the security and everything will be owned by you. Infrastructure and services are dedicated to a single organization here, and it offers great control, security, and customization options. Ideal for organization with strict data privacy and regulatory requirements. They can be hosted on premises or by third-party providers. And when we talk about hybrid, of course,
in simple notes, I can say this is the combination of private and public cloud. So whenever you mix some features from the public cloud and private cloud, the security from your own side, storage from their side, any properties, if you are going to mix from both the end, you will be getting this hybrid cloud property. Coming to the next types of cloud computing. Before going to this or explaining its property, I'd like to tell a story or just wanted to make it interactive. I would like to tell you, of course, everyone here, those who have joined, they must be knowing about pizza. They must be eating pizza. They must be knowing the process. So whenever you are going to make pizza, I start from making pizza at home. If you are making pizza at home, you need oven, you need all the ingredients, you need a grill, oven, whatever you need, utensils. Okay. So if you are going to buy everything from scratch, everything, you will rent or you will own a kitchen, you will be having gas, stove, everything on your own. It means that is on premises. You are doing everything on your own. In a company, comparing the same thing to a company, if you are going to make an IT company, and then in the IT company, you are going to rent a place first, or you are going to construct a house, whatever, building. There you are going to buy all the systems, you are going to install applications, all licensed, everything. So this it will be going under on-premises infrastructure. Coming to the next, if you are going to have infrastructure as service, it means the infrastructure you will be renting. You will be renting some virtual machines. You will be working on it. Let's say I am having a laptop which is having just 2 GB of RAM, but I want something 32 GB RAM. I want for an application, I need that. So what I'll do, I'll simply rent it from any of the cloud service providers. They will provide me the system, and then with the system, whatever I want to do, I will do on it on my own. Operating system will be of my choice. The applications, the supporting the software, everything I'll decide. I will be renting the system, a virtual machine. That service, we call it infrastructure as a service. Coming to that pizza thing again, suppose I'm going to rent the gas stove or the grill or whatever, or a kitchen I will rent, but I will bring my own ingredients, everything. If I want to make pizza, I will make pizza. If I want to make bread, I will make bread. That's of my choice. But I will be renting your kitchen. In that case, it is infrastructure as a service. Next come platform as a service. So there it will give you more choice. You can come, you can have your own kitchen, you can have a variety of pizzas, whatever you want, you can choose and you can cook. So such a service is platform as a service. So coming back to the cloud computing or the IT structure, you are going to rent the systems. Along with the systems, also you are going to rent the service provider. They will be giving you applications along. Everything will be given by them. You just need to make choice. Yes, I need Java, I need Python, I need the environment for this. Everything will be chosen by you. That service is known as platform as a service. Last one is software as a service. Software as a service, everything the cloud service provider will make, you are going to make use of that platform. You will simply make use of the platform. For example, Gmail. Google has made it. You are simply using it. You are simply putting your mail ID, password, and it will be working. And then coming back to the pizza thing, of course, all of you must be knowing it. Swiggy, Zomato. You just need to order it. It will come to your home, and you have to eat it. The only work you have to do is you have to make use of it. You just select it, and it will be ready to use. So look here. Here I have divided the infrastructure into 4 different categories. On-premise means everything will be used, will be managed by the user.
The orange ones are those things which will be managed by the cloud service providers. So in on-premises, all the things like applications, data, runtime, middleware, operating system, virtualization, servers, storage, networking, everything you will have to take care on your own. While in infrastructure as a service, everything under the operating systems, they will be taken care by the cloud service provider, while those things above the operating system, they will be taken care by you. Platform as a service, again, you just need to choose your applications and data. Rest, everything will be taken care by the service provider. For software as a service, everything will be taken care by the cloud service provider. This is the difference of different types of services that clouds can provide. Of course, you will have to pay for it. And as compared to on-premises, all the other three options are going to be cheaper. So here are some of the benefits which I can list. Of course, they are cost saving, scalable and flexible. Suppose in the weekends, you want more services. In weekends, you are hosting a website, and in weekends, the number of requests is more. Then in that case, in weekends, you want more service. So in that case, you can scale it to your level, whatever you want, up to your budget. And again, on Monday, you can scale it down, scale up and scale down. That can be done easily. Accessibility and mobility. Work from home is the best example for this. You can access it from anywhere you want. You don't need to sit in the office for any data you want. Reliability and high availability. This is used in case of your, suppose there is a disaster. The point number 4 and 5, they're quite relative, like disaster recovery. Suppose there is, you have your own data center, and there is tsunami or any disaster, any earthquake is there, and your data center is completely lost. What in that case? Suppose you are having on-premises system, it means your data is completely lost. Same way, suppose you are having all the data in cloud. Cloud will keep 3 copies of your data. In case one of the data center is damaged during a disaster, a second copy will be available in second data center, and similarly, a third copy will be available in a third data center. So there is never data loss. Of course, you can have versioning, that suppose I'm doing something now and something I did yesterday. Maybe it's not updated in real time, but the loss of data will be very less. Next comes the security. Of course, sometimes some big companies, they are quite insecure about the security thing. In that case, they are having different options. Like I said, you can rent a data center, a system. In data centers, we are having a lot of systems. What these big companies will do, they will rent the complete data center, or they will rent complete systems. Suppose there are 1,000 systems, then if there is a big company, they can rent hundreds of systems, and they don't allow any other to share those systems. In this way, the security is also maintained. Collaboration and productivity, of course, suppose I'm working on a data set and I want somebody else from your team to work with me. If we are working on cloud, then we can share everything, we can collaborate. Now everyone knows that Google Sheets, so collaborations, and then GitHub and all. So these things, they work in cloud platforms. So collaborations are easier, which in turn causes increase in the productivity. Innovation and time to market. And last one is the environmental stability. As I said, it goes with the time. This is the latest trend. You don't need to expand actually in the infrastructure. You just need to, you can work from anywhere. Now, these are some of the leading cloud services, service providers like AWS, Alibaba Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM, VMware. So this image I have taken from Gartner. This has divided the map into 4 quadrants, where the first quadrant is the niche players, second is the
visionaries, third are the market leaders, and the last one is the challengers. Currently, in the leaders, you can see 3 cloud service providers. They are Amazon Web Services on the top, Microsoft, and followed by them, there is Google. So you just think the Google which you are using on phone, which you are using, it's not the only thing that is having its market. There are others which are above Google. This is a map from last year. Last year, as of June 2022, I have taken it. So Microsoft is there, which lies above Google. And you can see the difference above Microsoft, how much gap is there. After that comes the Amazon Web Services. If you know, Amazon Web Services is currently providing 750 hours free tier. If anybody really wants to use it, you can. This is the right time to use it. They provide monthly 750 hours free usage. So in this way, they are expanding their market. Just like Amazon shopping site, they did 4 years back or 5 years back. They provided Prime for free. And now everybody is used to it and they are buying it. So currently they are providing free cloud service, 750 hours free cloud service, so that everybody will be using it. And then once they are used to it, you will be paying for it. Like the way we are paying for Prime. So this is evolution of AWS. It's not one day thing. We are in 2023 now, but they started back in 2002, and it was internally launched in the year 2002. Followed by that in 2003, there was Amazon infrastructure is one of the core strength. Then idea to market. 2004, they launched publicly with SQS. SQS is one of the service, simple queuing service. And just with that service, they started. 2006, they relaunched the publicly with 2 more services. That is EC2, Elastic Compute Cloud, and S3 and SQS. S3 is a storage service, that is simple storage service in Amazon. So just like Google Drive you can save anything. Amazon is having S3. So it is something similar to that. Then again, 2007, they launched in Europe. In this way, first in 2002 or 2003, what I'm saying, they launched in US only. Then they started expansion. In 2007, they expanded their circle to Europe. And currently, the most leading companies like Dropbox, Airbnb, NASA, Netflix, everybody is using AWS just because it's cheaper. That is the first prime cost. Other causes like the services, because if one services launched with one of the company, of course, there are super engineers and resource persons, they are going to make some substitute of it. So almost every service providers, they provide the services. It's just variations, but the services are available. So this is the global infrastructure. You can see in the world, these dots. Here we have yellow and blue dots. The blue dots are the regions. Okay, let me tell you something. Like the regions. When we combine some data centers, we make availability zones. When more than 2 availability zones are combined, we make regions. And currently, AWS has 27 regions, and the yellow ones are coming soon. So they will be coming again. So you can see in India, we have that yellow one. It was actually, this image is not very up to date. That's few months back. But now we have that coming soon in Hyderabad, that yellow circle you can see, it's already there. So in this way, Amazon is actually expanding its infrastructure. So it's expanding more and more so that there will be more customers. So this is going to be one of the leading cloud service providers in the near future. So you must know how to use it. And of course, you will have less expensive services if you are going to use this AWS.
So here are some of the popular services of AWS. Just like I told you in the beginning, you can rent virtual machines. In top, in the top hexagon box, we have Amazon EC2. That is Elastic Compute Cloud. EC2 stands for Elastic Compute Cloud. So you can rent virtual machines. These virtual machines are known as EC2. Coming to the next point, that is the green one, Amazon S3, simple storage service. Whatever you want to store, it allows you versioning as well. Whatever you want to store, you can store. Storing in is free, but data out, if you want to take out some data after 10 years, Amazon will be charging you for that. It will not charge you for putting any data in. So this is another one service. Next is Amazon Lambda. So suppose here you don't need, this is a serverless service. Serverless means there is, it's not like there is no actual server, but actually you don't need to manage the server. Suppose at night, 12 o'clock, there is a sale in Amazon. So everybody will try to get the mobile phones and other products at a cheaper cost. So the server should not fail, right? So there should be more number of servers to give service to the clients. In that case, peak at 12 o'clock, it means from 11:50, we are going to rent some additional servers, which will last hardly for 1 hour or 2 hours. But after that, if we are renting the same thing for whole day, we will have to pay more. So what this serverless service will do, they are going to work as per the predefined instructions and no need for just like alarm and all. You can just put it and forget it. Whenever the number of number of clients are increasing, it is going to increase the service. And if the number of clients are decreasing, it is going to decrease the service. DynamoDB is one of the databases. Similarly with RDS also, relational database, and VPC. VPC is virtual private cloud. Suppose you are hosting a company and you are quite worried about the security, privacy. What will happen if I'm storing the data in cloud? Maybe somebody will be taking an on, and you want to have a one-to-one peering with the data centers. So in that case, you can use the virtual private cloud. So there are these are some of the popular services of AWS. This is not a complete list of services of AWS. There are a lot, but I have just included a few here so that you just know, you will have an idea of what AWS is actually. So if you want to start any project, if you want to work in this IT company or anything, you should have have some knowledge about AWS. It's providing some certification courses also. If you want to go, you can pursue that. Just learn it and get it done. And if you are having these skills, of course, any of the company will be taking you easily. So finally concluding, cloud computing powered by AWS is reshaping the IT landscape, enabling business to be agile, cost-effective, and competitive in the digital era. As technology continues to advance, leveraging the cloud and AWS will be vital for organizations to thrive in a fast-paced, data-driven world. So these are the references. Any questions are most welcome. Thank you so much, ma'am. You shared very informative knowledge to us. Ma'am, yes, ma'am, I'm audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yeah. Anyone? Any question? No, Ma'am, ma'am, any PPT questions share from करने anyone? के लिए PPT share करने के लिए बोल रहे हैं मैम बच्चे. Okay. Thank you so much, ma'am. Yeah.
Thank you so much all participants. Sorry, all participants. आप मीटिंग से लीव कर सकते हैं आप. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.